Oh, what a feeling this was for the fearless leader of Lahore Qalandars, Shaheen Afridi, with his second fifer, the most of any bowler in the history of the HBL PSL. He was just incredible, removing Saad Masood there. 5 for 40 he ended up with in this first match back at Gaddafi Stadium. It was a wonderful match. If you've just joined us, my gosh, you've missed a high-octane, high-scoring affair. Lahore Qalandars, well, they opted to bat first and they put on 241 for 3. Fakhar Zaman just brilliant up the top there, 96 of 45, supported by Abdullah Shafiq and, of course, Sam Billings, both with half-centuries for themselves, or almost half-century for Billings if we let him keep going for a few more balls. Peshawar Zalmi, well, they put up a valiant effort, 209 for 1, so they made for 9. But unfortunately they couldn't get across the line today. It was such an incredible match, boundaries galore, stats galore. It had absolutely everything, this match. Hello and welcome back to the Pitchside studio. I've got Dominic Cork and Sam Billings alongside me today to chat through. And Sam, no jet lag for you. My gosh, you literally flew in straight, came in hot off the plane, and here you are performing for your team once again. What a win to be a part of. Yeah, amazing start. First game, obviously, and first game for me in Pakistan. So to experience this, the crowd was amazing, and what a game to be a part of. Oh, it was just brilliant, wasn't it, Corky? It was great. 47 from 23. What were you doing? Well, you get on with it. I know, just kept still. I had Fakhar down the other end. Well, I was going to say that. I could just give him strike. That was the one thing I was going to say. You know, you've played a lot of franchise cricket. To be at the other end to Fakhar, tell us about what it's like, because he just looked immense. Phenomenal. I think the thing that stuck out for me was how still he stayed and how he can access the whole ground. So you see a lot of people when they're trying to hit sixes just thinking either cow corner or long on, but he kept over extra cover and all the way around the ground, all available to himself. So yeah, that's when someone's playing really well. Mentally, they've kept all the options available. Tell us about the game plan, because we're sitting up there. Me and Aaron are doing a little piece on Shaheen Afridi. We're talking all things. What were you saying as a team? Win the toss, have a bat first. What are you saying? Yeah, I think the backing is what a great bowling attack we've got. Obviously, the best leg spinner in the world helps. He didn't have the best of nights by his standards tonight, but you've got the pace attack as well, which throw different challenges at the batting side. So yeah, we back our bowling attack to protect any score that we have, especially on these small grounds. So that's the thinking. I think with the dew and how much it came down tonight, potentially you might see bowling first as well. And you batted absolutely beautifully. You said it's your first time here in Pakistan, so therefore your first time here at Gaddafi Stadium. Talk to me about conditions, because you said it's just the most beautiful place to bat on. It was a beautiful wicket out there tonight. Yeah, it was. Fakhar, as soon as he, as I came out there, it was about actually giving myself a couple of balls, and it's not just trying to swing from ball one. He said good cricket shots, stay still, and you get real value for it. And as you mentioned, when you've got a guy like that at the other end, you take your ego out of the game, you get him on strike, and he's absolutely flying. And then it's your turn to, obviously, if your matchup comes along or someone else, you get one away, it's your opportunity to then cash in. It's up to you to do that. Gloves on tonight. You've kept to some left-armers in your career, David Willey, Topley. Tell us about this man, Shaheen Afridi, because we did something at the top of the show talking about his wrist. That was something special. I don't think people probably at home will realise how small the ground is, how the conditions are so good for batting. 5 for on that is phenomenal, and for me, he's as good as anyone in the world in all formats. Why? Actually. Late swing, action, pace, why? Well, combination of all three. Initially, with the new ball, everyone in the world, or especially like those left armers, you say, they swing the ball, but it's out to the hand. When he's got a perfect seam position and it goes so late, and then it hits the seam and keeps going as well. So, I mean, to get a player like Baba bowled doesn't happen very often. It's got to be a special bowler and a very special ball. I mean, they threw the gloves at you game one, and you're keeping to the likes of Harris Ralph, who, gosh, I mean, he bowls a mean ball with some serious pace. A bit of a wakey, like no time for jet lag when they're coming at you that fast. Yeah, I think, again, he's a class performer. He's played all around the world. He's adapted to different conditions, and tonight was probably a bit of a different challenge for him. First over,
he didn't quite get it right, but to then come back and get the big wicket of Tom Kohler-Cadmore shows kind of not only the skill level but also the character of the man. So amazing. Okay, I have to ask you about the chirp behind the stumps to TKC as well, because these guys had a front row seat to that. I was Devo, I couldn't actually hear exactly what was going on in the stump mics, but talk me through it. What were you saying? No, nothing bad. He's my mate. What did I say? Oh, gloved one or something? Yeah, they missed one it, in the first innings. Don't look away, Richard Illingworth. It didn't happen. Yeah, and no one. I got away with one. You didn't, because we highlighted it all the time. Simon Dole picked it up. I got away with it. You got away with it, but not on TV. But no, great. Look, I'm pleased for you. One thing I want to ask you: you're coming into a winning franchise. Is that what's on? That's what Shaheen Afridi's saying. We win it again this year. Obviously, Multan are setting the pace. They lost today. Win it again, back to back. That's always the aim. Again, it's the process and sticking to what we do well. I think they've got a really clear idea, just from the meetings I was in today, very clear idea of how they want to play their cricket. They've got a lot of experience, all up and down, with a sprinkling of youth as well. So it's a perfect combination. And consistency in franchise cricket is hugely underrated at times. They know their process, they know their personnel. Yeah, that's the number one thing that all successful franchises have, and they have. We'll be in and around if we keep playing like this tonight with the finals. Oh, you're absolutely brilliant tonight. We will let you go and get some kips. So appreciate you joining us here today, and we can't wait to see you next match. No worries. Yeah, well done. Congrats, mate. Nice Congrats. to see you been to me. We'll send him off. All right, well, that brings us to our next part of the segment, which is, of course, our Master Blaster of the match. And no surprises who that goes to tonight. It was Fakhar Zaman, unbelievable for his 96 today. 10 sixes and 3 fours. He was just bludgeoning them all around the ground, Dom. He was fantastic throughout. He is, seriously, when he's in this form, you just can't not bowl at him. He's strong, 360, and he just smashes it out of the park. Oh, you think he'd be absolutely kicking himself. He left that 100 begging, but he was absolutely unbelievable to watch. As we say hello to Waqar Younis, who's just slid in to middle hosting position. Just quietly. Oh my gosh, what an absolutely incredible match that was. Yeah, awesome. I mean, first of all, I think credit goes to the ground staff. Yeah. I think they've done a wonderful job. First game of the HPL PSL 8 here in Lahore. Ground looked really good. The square looks good, and the pitch was outstanding. I mean, scoring these many runs in 40 overs, you cannot ask for. The crowd really got their money worth. And it was a night for records that tumbled left, right and centre as we take a little look at the stat attack for the evening. And I'm just going to take a big, deep breath here because, my word, we've got a few to go here. 28 sixes in a match, the most number of sixes in any match of the HBL PSL. 241 for 3, the third highest total ever in the HBL PSL. Highest total for Lahore Qalandars, the 8th 200-plus total for Lahore Qalandars, the most of any team in the HBL PSL. 442 runs in this match, second highest match aggregate. 10 sixes for Fakhar Zaman, second highest in an innings for any batter. Shaheen Afridi, the only bowler, as we mentioned, to have 2 fifers in the history of the comp, and Shaheen Afridi's 5 for 40 is the second best figures by a captain ever in the HBL PSL. So what a night to remember for the Qalandars. Well, what's your best record, Waqar? I reckon you've got a few hidden in your back pocket. Mention that. Do not mention that, because it's against England. Leave it alone, and you know it is. Forget about it. Hush from you, Waqar. Come on, tell me. Now, there's some really good records there. I mean, I am not going to go to. I know Koki's not going to like it, so I'll just leave it there. But it was an outstanding, evening of cricket, and I was right. You know, the ground staff deserves the credit, because all these records, all these sixes, all of that, because of the surface, because of the pitch, was really, really excellent. The one thing I'd just like to add is the crowd as well. We talked about the atmosphere at Multan, which was electric. We were there.
But to come out, I know it's a Sunday, and obviously a lot of people came in, and hopefully you come again tomorrow. But it was brilliant. It was electrifying. We were out there. You could sense they wanted to win. And what a game to come and watch. The first game, 400 runs, all those records, and hopefully we see more tomorrow. No, it was absolutely unbelievable. If that is a mark to go by, Gaddafi Stadium is ready to rock and roll in HBL PSL 8. And we're continuing to rock and roll here at the Pitchside Studio. Do not go anywhere. Plenty more after the break. Welcome back to the Pitchside Studio. Thank you, Aaron. Here we are talking of match 15 and more about batters all through the day, because it's just been about runs and runs. 440 plus runs scored today, and one man who stood out with his 95 or 40 odd, 10 sixes and 3 boundaries, and he started off with nothing in the power play. Fakhar Zaman is the player of the match. Well, we all know what Fakhar is capable of. I mean, he took his time to begin with. 45 deliveries, 96. I mean, if you take out his first 15 delivery, he hardly scored a run. And then once he gets going, he's one of those cricketers. It's hard to stop him because he's 360-degree player. He plays offside, onside, difficult to handle once he gets going. Have a look at his wagon wheel, and you know he's very strong always leg side, but what was good about him today, when he got pace offside as well, he used it straight down the ground as well. You can just see when he plays these sort of innings, it's very hard as a bowler to stop him. He was sensational today, and hence why he was player of the match. I was talking to Fakhar Zaman at the post-match presentation, and you said that this was a deliberate effort. We didn't want to lose any more wickets in the power play, go nice and easy. But that usually doesn't happen, that Fakhar goes boundaryless in the power play. Yeah, it's unreal, isn't it? And then getting 96 or 45 deliveries. That's why I always say that Fakhar is one player, even if he takes a little bit of time, he will come back. He will recover. The team will recover. And that's exactly what they did. I mean, first, if you look at the first 3-4 overs, you think, oh my God, it's not going to be easy to bat on that. And once 4 or 5 overs gone, it gone a little flat, and the bowler's gone flat. I mean, that was disappointing. I mean, they did not really have a clear plans in their mind, Peshawar Zalmi. They were all over the place. They were bowling left, right, center, and then getting punished. And he's one of those batsmen, he plays cross bat. And you're always in the game thinking that he's going to, top edge one and he's going to go up in the air and I'm going to get his wicket. But I tell you, he doesn't. He hardly, top edges once he sees the ball, once he starts seeing the ball. Sam Billings said, and what was interesting what Sam Billings said was the fact that they thought it would be tough to get through the power play, which we saw that. Me and you were on commentary. There was a little bit in it, and you thought, go on, Babrizam, get 2 or 3, slips in there. And they saw themselves through it, and I think that's what was testament to Fakhar Zaman's innings, that he wasn't bothered about a big power play. It was about getting towards the back end and what he could do from 5 to 10, 10 to 15, and then that last 5. He didn't get to that, obviously, 100. It was a fantastic innings. A lot of people would maybe think Shaheen Afridi should get the player of the match for his 5 wickets, but I think it was set up by that innings, and obviously Billings as well. I thought it was a brilliant performance. Yeah, absolutely right about that. Everybody had a go today. Even the bowlers, you mentioned Shaheen Afridi's 5. Talk about switched on moment, and that delivery that probably sent ripples down that dugout of Peshawar Zalmi. It was Babar Azam being dismissed by that perfect ball from Shaheen. Yeah, wide of the crease. If you just look at it closely, that seam position will come back to that. And once he hits the seam, it just nips back. It is difficult when you're looking to drive. A quick one, when you look at this surface outside, you say you should salute the curators because 400 plus runs, a 5-er there. I mean, everybody had a piece, and it's a perfect entertainer for the crowd. Well, it is, and for 2
very old, not well, I'm very old, he's not very old. Cricketers watching somebody like him at the top of his game, it is like watching him. It's like watching Wasim Akram. It's like watching somebody at the best do it. And when it's involved with a T20 with all those records as well, that's why when we're up there commentating, it's the hairs on the back of the moment, because you know this sort of guy is so difficult to play against. His wrist position, his pace, his height, his position on the crease. Or any young boy or girl out there who wants to bowl, watch Shaheen Afridi. He is literally brilliant. Yeah, he was indeed. Well, we thank Dom right here. Thank you for joining us, and we'll catch more of you tomorrow. Time for us to take a short break. When we come back, we've got more to talk about on game number 15. वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। मैं सिकंदर आपके साथ, और आज के इस मैच में किसी को मजा आया हो ना आया हो, मरीना को जरूर आया होगा, क्योंकि वो है एक बैटर और हमारे साथ कमेंट्री पैनल में ज़्यादातर बॉलर्स है। तो आप बताएं कि आप पूरी तरह से महसूस हुई? बिल्कुल हुई, और बैटिंग भी अच्छी देखने को मिली, बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिली। मैंने पहले कहा था कि ये पिच ऐसी है कि दोनों के लिए बहुत अच्छा बैलेंस है। जो अच्छी शॉट्स खेल रहे थे उनको उसका रिवॉर्ड जरूर मिला, और बॉलिंग का भी सेम था। और बहुत ज़्यादा रन पड़े, 28 छक्के किसको बोलते हैं, मतलब आज तो मतलब बॉलर बनना अजाब था। चलिए, बात हो रही है मोमेंट्स की, तो फॉलो विकेट्स देखते हैं। पेशावर की 9 विकेट्स गिरी और हमें मरीना बताएंगी कि उनका क्या ख्याल है। शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग आगे गेंद करते हैं और वापस लाते हैं। ये दोनों ओपनर्स को वापस एक ही तरीके से भेजा। पिछली गेंद पे बाबर ने चौका मारा था, वो बॉल अंदर नहीं आया था, लेकिन ये कट के अंदर आया उसी लेंथ से, और ये थोड़ा सा वर्नेबल एरिया है। ये स्लोअर वन रिसीव हो गए थे, बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाए, और शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल करेंगे, लेकिन मोमेंटम इन दोनों ने अच्छा पकड़ लिया था। साइम इस बार थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस से मार खा गए। कनेक्शन अच्छा था, लेकिन पेस ऑफर नहीं की गई थी। जमान ने भी अच्छी बॉलिंग की, ये एक बड़ी विकेट उनके लिए थी। ये भी चिप कर दिया था, पूरी खेलने नहीं गए राजा पक्सर। और थोड़ा सा ये देखें, ये जो शॉट थी आई थिंक थोड़ा सा एक कैजुअल शॉट कह सकते हैं। जिम्मेदारी इस टाइम बहुत थी पावल पे, ब्रियाज भी स्लाइस कर बैठे, और ये बहुत ही लाजवाब कैच था। लाहौर की बॉलिंग बैटिंग तो अलग, लेकिन फील्डिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स बचाए भी हैं। एक और अच्छी डिलीवरी शाहीन अफरीदी की, और यहाँ पे ये राज करते हैं। ये थोड़ा सा लूज शॉट था, लेकिन अपना 5 कंप्लीट करने में कामयाब हुआ। शाहीन ने अपने ओवर्स में 40 रन देके 5 आउट किए, वो सही है, लेकिन मैं वकार से पूछूंगा कि एक स्टेज ऐसी आई थी गेम में जहां पे कोला कैडमोर थे और साथ में साइम थे, गेम लेके जा रहे थे। उस वक्त जो एक छोटा सा स्पेल किया हारिस रऊफ ने, और जो स्लो बॉल्स कराए, कैडमोर को रिसीव किया आगे भी, वो अननोटिस चला गया, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था आई थिंक टू ये स्टॉप लगाने में। सिकंदर, जब 240 रन आपके पॉकेट में होना, तो फिर आपको 1-2 ओवर अच्छे चाहिए होते हैं, या 1-2 डिलीवरीज अच्छी चाहिए, मौके पे विकेट लेना अच्छा है। और आई मीन दे ऑल एक्सपीरियंस। और ये कमेंट्री में भी यही मैं बात कर रहा था कि इनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड बड़ा अच्छा करते हैं लाहौर कलंदर के जो बॉलर्स हैं ना, कि जबकि प्रॉब्ली पिछले 5-6 साल से जबकि ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सारे लड़के एक ही साथ ही खेल रहे हैं। सो आई थिंक दैट ये बहुत बड़ा एज होता है। वीसे भी काफ़ी अरसे से लाहौर कलंदर के साथ हैं, फ़खर भी है, तो एक ये बड़ी जेल टीम लग रही है, बड़ी डेंजरस साइड है, और शाहीन बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं। सो आई थिंक जो भी होता है दे रियली फाइटिंग आउट देयर। ये टीम बाहर है जो कभी भी गिव इन नहीं करती है, और दे आर ऑलवेज अप फॉर द चैलेंज। हमने मेंशन किया बॉलर्स का जो रिश्ता है आपस में बना हुआ है फास्ट बॉलर्स का। हारिस रऊफ ने आज तेज तरीन गेंद की, हमारी फास्टेस्ट डिलीवरी 148.7। लेट्स हैव अ लुक। HPL PSL की जब भी बात की जाती है, तेज बॉलर्स की बात की जाती है। एहसानुल्लाह को देखा 150 टच किया, हारिस का तो पता ही है समवेयर अराउंड 150 वो भी करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इनको एक स्पॉट में नहीं डालना चाहते, लेकिन डालें। फास्ट बॉलर्स बेटर कप्तान होते हैं, अग्रेसिव होते हैं? आप देख लीजिए पिछले साल HPL PSL किसने जीता था? इन्होंने। और उससे पहले उन्होंने कभी नहीं जीता। सो दैट्स योर आंसर। बट फिर भी ऑन अ सीरियस नोट, क्या आपको ज्यादा वो दिखता है अग्रेशन फास्ट बॉलर्स का नेचर की वजह से, या इट्स जस्ट अ मिथ?
Look, I mean, it's just all about, you know, good brains and who can control your emotions. Basically, कप्तानी में emotions का बड़ा हाथ होता है. आपको, you know, you got to really stay calm at times. Sometimes you have to be aggressive. So इसलिए शायद एक myth भी बनी हुई है या शायद हकीकत भी ऐसी है कि जी, क्योंकि जो बैट्समैन होते हैं, either they're standing in the slip or they're standing in certain areas where they're not really exerting that much. जब आप exert नहीं कर रहे होते तो probably सोचते बेहतर हो. और फास्ट बॉलर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैरी ऑन ज़रूर थोड़ा सा कैरिड ऑन कर जाते हैं. आई थिंक माइंडसेट्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर सोचता है कि विकेट कहाँ से और कैसे ली जाए, बैटर सोचते हैं कि रन्स कहाँ से जाएंगे, कैसे लीक होंगे, तो थोड़ी सी डिफेंसिव साइड आ जाती है बैट्समैन की. तो बैटिंग जो कप्तान होता है तो इसका मतलब बॉलर कप्तान बेहतर होते हैं. फिर ऐसे ही इसको बैट्समैन गेम कहते हैं. अच्छा, चलिए बात करते हैं फखर जमान की. बैट के साथ 96 रन बनाना, उसके बाद आके ऐसा एक कैश ले लेना, विच इज ऑफ कोर्स आवर सेफ हैंड्स. हैव अ लुक. देखिए इन्होंने डिसमिस किया था वहाब रियाज को. कंप्लीट साइट है. अगर आप बात करें लाहौर कलंदर्स की, बहुत अच्छा कैच लिया था, एक टेक्निक अच्छी थी, शोल्डर ओपन करके रन बैक किया और बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ डाइव किया. स्लाइस किया हुआ बहुत इजी नहीं होता जज करना, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि किस स्पेस से बॉल कितना कैरी अवे करेगा. शानदार कैच. कभी कभार कहते हैं ना, वो एक ऐसा दिन आता है जब आप कुछ गलत नहीं कर सकते, और आज फखर जमान का दिन था. और उन्होंने पहले सबको हैरान किया कि कुछ नहीं कर रहे थे पावर प्ले में, उसके बाद उन्होंने 241 बनाने में कितने 96 खुद कर दिया और ये कैच ऐसा पकड़ लिया उन्होंने. आई थिंक जब एक कलंदर्स से कलर पहनते हैं तो फिर वो इस ग्राउंड में तो टोटली इनका फेवरेट नजर आता है. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और चीजें हैं इस गेम में जो हाईलाइट करनी है, हमने दिखानी है किस तरह से कलंदर्स ने 40 रन से ये मैच जीता. सो डोंट गो अवे. वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो. एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है. मैचेस अंदर एक चल रहे होते हैं और एक बाहर चल रहे होते हैं. वो ये कि कौन से ग्राउंड में कितना क्राउड आता है. और हमारे दो गेस्ट तो बहुत प्राउड होते हैं कि जब लाहौर खचाखच भरा हुआ है. तो आज देखते हैं रिंग साइड व्यू में क्या हुआ. एंड देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल टू ग्रीट विद ओपन आर्म्स द HBL PSL 8 ओपनिंग गेम हियर. मैं लाहौर कलंदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ. शाहीन अफरीदी ने फखर जमान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सामने. आइंदा से मुझे उम्मीद है कि लाहौर के अंदर होम ग्राउंड और भी मैच जीतेगी इंशाल्लाह, और हमें टूर्नामेंट PSL 8 का टूर्नामेंट विन कराएगी. यस, लाहौर के अंदर लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सपोर्ट किया. और आज जो आउट क्लास परफॉर्मेंस लाहौर ने एक्स्ट्रा एफर्ट की, जैसे फखर जमान, शाहीन अफरीदी, लेकिन पेशावर ने भी बहुत एफर्ट की. बाकी किसी एक टीम ने तो विन करना ही होता है. लाहौर कलंदर की जीत ने खुश कर दिया आज, और शहीन ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया. शहीन ने जो पहली बॉल के ऊपर बैट उड़ाया ना, बस पैसे वसूल थे उस टाइम के ऊपर. क्लोज मैच हुआ है और हाई स्कोरिंग मैच था, इसलिए हमने बहुत एंजॉय किया है. और शाहीन अफरीदी ने जिस तरह बॉलिंग कराई है, कमाल. लाहौर कलंदर जिंदाबाद. बार बार यही बात बोलता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको ओनरशिप नजर आती है. और ये आई थिंक अचीवमेंट है. ओवर 7 सीजन्स और ये 8वां बिल्कुल अचीवमेंट है. और ऑब्वियसली एसोसिएशन होती है तो एक अलग किस्म का पैशन होता है. और 14 मैचेस के बाद जिंदा दिलाने लाहौर ने आज मायूस नहीं किया. और ऑब्वियसली टीम्स को भी जब अंदर आप खेल रहे होते हैं, आपके पीछे बैकिंग होती है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है. और इनके शहर ने भी बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया मुल्तान ने जब वहाँ पे गए थे. देखिए, लाहौर मुल्तान का अभी तक मैच न डालें, क्योंकि मुल्तान अभी भी आ गया है, क्योंकि वहाँ 5 मैच हुए थे, 5 हाउसफुल थे. आज वीकेंड था, ठीक है, लाहौर हाउसफुल था. मैं मानूंगा तब जब आगे, जब वीक के विद इन वीक जाएंगे, वीक के अंदर ही हाउसफुल होगा, जो कि मुझे शक है कि होगा. और मुझे उम्मीद भी पूरी है, क्योंकि मुझे पता है लाहौर को बैक करने आएंगे. सो आई फील दैट इट्स गोना बी ग्रेट. आई मीन PSL हमेशा ही एक बड़ा ब्रांड है और लोग पसंद करते हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करना. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक एंड आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये छोटे शहरों में और जाए. जैसे फैसलाबाद है, सियालकोट है, और बड़े छोटे शहर हैं. होपफुली पेशावर नेक्स्ट ईयर जाएगा, कोयटा जाना चाहिए. यू विल सी कि इंशाल्लाह दिस विल ग्रो.
अच्छा, मैं तो डरते डरते कराची को लाया नहीं इस रेस में। आपने कहा लाहौर मुल्तान में रख लो, आपस में देखते हैं कौन सा था। नहीं, आप ला भी नहीं सकते। मैं लाने नहीं, मैंने जिक्र ही नहीं करना, बनता ही नहीं। हाँ जी। ओके, मसालेदार मोमेंट एंड दे वर क्वाइट अ फ्यू, बट 28 छक्के एक मैच में, ये रिकॉर्ड है HBL PSL किसी मैच में 28 छक्के नहीं लगे। जिमी नीशम ने मारा था ये छक्का। लेट्स हैव अ लुक। आज तो वाकई छक्कों की बरसात हुई है और जिस तरह की पिच थी, अच्छा पेस से गेंद आ रहा था और बहुत एफर्टलेसली हमने देखे हैं कि छक्के लगे हैं। सिर्फ टाइम करने की देर थी। जिमी नीशम के जोन में ये आ गया था और रिकॉर्ड भी बन गया एक। Has the highest number 28 sixes. I mean 168 तो यही होगा। ये एक्चुअली रिकॉर्ड है, जो मैंने अभी जिक्र किया कि HBL PSL किसी एक मैच में इतने छक्के नहीं लगे, और वो तो होंगे ऑब्वियसली क्योंकि जब आप 440 से ज़्यादा रन्स देखेंगे तो ये अब चैलेंज बढ़ता जा रहा है। हम जो देख रहे हैं जिस तरह से, और अगर ऐसा खेलेगा पिच या आगे अगर स्क्वायर ऐसा खेलेगा तो फिर जो टीमें नीचे हैं उनको भी अपना जो है ना तस्मे, वो कहते हैं ना, सॉक्स अप करने पड़ेंगे। देखिए पॉजिटिव है मेरे लिए तो इसमें दोनों के लिए, जैसे मैंने बोला है, अच्छी बॉलिंग का भी आपको सिला मिला है, अच्छी स्ट्रोक प्ले का भी आपको सिला मिला है, तो ये एक बैलेंस चीज़ है। एक्सिक्यूशन बहुत मैटर करती है और अगेन वही बात है कि आप किस प्लान से आते हैं। पॉजिटिव इंटेंट से आएंगे क्योंकि T20 सारा मोमेंटम का गेम है, चाहे वो एक ओवर में आपको मिल जाए। हमने शुरू में देखा लाहौर के पास मोमेंटम नहीं था, पेशावर के पास था, लेकिन जैसे ही मोमेंटम मिला वो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये आपके पास बहुत छोटे मार्जिन होते हैं कि जहाँ पे आप मोमेंटम अगर आ गया है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये आपकी पूरी गेम ले जाती है। अच्छा, अगर हम ये बात करें टेबल की, तो सिचुएशन जो अभी इस वक्त चल रही है, ऐसा तो नहीं है दैट टू टीम्स आर जस्ट रेसिंग अवे, और एक बेहतरी हो जाएगी नीचे वालों के लिए कि 4-4 पॉइंट पे 3 टीमें हैं। ज़ल्मी अभी भी 4 पे है, कराची आज जीत गया, वो 4 पे आ गया। सो एक तरह से बेहतर है ये। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि किसी भी टीम को ऐसा नहीं फील आना चाहिए कि वो टूर्नामेंट से बाहर होगी, बहुत अर्ली बाहर होगी। अभी देखें तकरीबन हाफ में है, कुछ टीमें 6 मैच खेली हैं, कुछ 5 खेली है, लाहौर कलंदर अभी सिर्फ 4 खेली है, इस्लामाबाद भी 4 खेली है। सो वी आर सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन, क्योंकि अभी थोड़ा सा पिछले में भी फंसे हुए हैं और कुछ टीमें आगे भी चलेगी। हाँ, एहतियात ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप बहुत पीछे ना रह जाएं। कोयटा ग्लैडिएटर को मूव करना पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लेकिन हार गए हैं। कोयटा अगर कल जीती है तो वो ऊपर आ सकती है, कराची किंग्स से भी ऊपर आ सकती है। सो आई मीन देयर इज अ होप। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसको टोटल खराब हो गया। मुल्तान सुल्तान आज हारी है, इस्लामाबाद भी हार चुकी है एक मैच। कल बड़ा मैच है क्योंकि इस्लामाबाद का मैच है कल यहाँ पे लाहौर का। दैट इज you know massive game, the top 2 team. So उससे भी जो टीम एक हारेगी वो भी तो कहीं ना कहीं स्लिप होएगी। तो the tournament is pretty open. Actually come to think of it, you mentioned कि अभी 2 टीमें खेले, अगर ऐसे 240 बनाएंगे 41, और इस्लामाबाद पीछे यही करके आ रहा है 200 प्लस, तो कल का मैच तो आराम से 500 रन वाला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इस्लामाबाद जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, उनके बैटर्स जिस तरह बैटिंग करते हैं, क्लियर माइंड से आते हैं, और फिर लाहौर की तो हमने देख ही ली है, वो भी एक उसी ट्रैक पे सेम चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। और आई थिंक रन यहाँ पे रुकेंगे नहीं। यहाँ पे बॉलिंग कौन अच्छी करता है, फील्डिंग कौन अच्छी करता है, वो डिफरेंस डालेगा। I'll tell you what, this can be a powerhouse of a game tomorrow with Azam Khan, the kind of form he's in, and then we talk about what Fakhar did today. So Lahore और साथ में इनके होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये बड़ा मजेदार मुकाबला होने वाला है। बॉलर्स की जो है ना वो खैर नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। ये मैच नंबर 16 है, इसको हमारे साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वी विल कम टू यू एंड विल ब्रिंग आवर कवरेज। मैच स्टार्ट 7, हम लोग 6 बजे आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं आपसे क्विकली पूछ लूं आप दोनों से, वैसे प्रेडिक्शंस का टाइम तो है नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? थोड़े थके हुए होंगे लाहौर वाले बैक टू बैक गेम्स, या नहीं होगा बराबरी का? देखिए अब वो चक्कर नहीं है। T20 क्रिकेट में थकावट वाला सीन हो ही नहीं सकता। पिच वंस अगेन मैं समझता हूँ कि अच्छी होगी। कल नई पिच पे होगा, इसी तरह की पिच होगी, बॉल कैरी करेगा, अर्ली ऑन मूवमेंट मिलेगी बॉलर्स को। सो आज का मैच इस्लामाबाद में होटल में बैठ के या घर बैठ के ये ज़रूर देखा होगा कि क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट, और वो उस तरह की चेंजेस करते रहते हैं। दे डोंट माइंड मेकिंग चेंजेस। सो उनका जो डाटा बेस है और इनका जो एग्रेशन है जिस तरह चल रहे हैं, सो इट बी अ गुड गेम। चलिए, लाहौर या इस्लामाबाद जल्दी से? आई थिंक लाहौर। ठीक है, ओके ओके जी, हम रेडी हैं बिल्कुल आपके साथ, एंड हियर वी आर। सो टाइम फॉर अस टू रैप अप, एंड व्हाट अ ग्रैंड ओपनिंग टू लाहौर। इट्स नाउ अबाउट लाहौर एंड इस्लामाबाद एज लाहौर एंड पिंडी एज वेन्यूज। वील हैव अ लॉट ऑफ फन।
top. This was a little too full. And that's the way he goes. Oh, is that another one? Has he got enough of that? Taken away for sixth half century. Another half century for Fakhar Zaman. Oh, what happened there? Oh, clean him up. He learned himself a boundary, had width on it, hit it out the ground. He's a powerful man. 50 on 21 deliveries. That stopped that shot, that's trouble, gone. Oh, wow. 50 for Sam Ayoub. He was outstanding with the bat in hand. Bowled